Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome back again to online video classes. I am Raza Ali Mugheri, lecturer physics at Cadet College Panwakil. Once again, welcome you all in our these video classes. The topic that we will discuss today is sound. The sound is simply defined as the sensation of hearing which is produced at ear is known as a sound. The sound is produced due to the vibration of a body. Whenever a body can vibrate, due to its vibrations, the sound produced. And when these sound can reach at a human ear, they will produce the sensation of hearing. Now, these vibrations travel, they will travel in the form of wave, and the wave we have already discussed. These sounds are called as a longitudinal waves. Now the sound is a form of energy. It produces when a body vibrates. Sound cannot travel without medium. As these vibrations travel from one place to another place, they required medium for their propagation, medium for their traveling. If there is no any medium, the sound does not travel. It is heard at ear through medium. Whenever the sensation of hearing is only possible when there is a medium, because sound causes due to the vibration of a body, and these vibrations does not travel without any source, any medium. As you see in the diagram, here we have a simple speaker from where the vibrations can be produced. These vibrations can be travel in the form of wave. Whenever these waves can be heard or reached at a human ear, they will produce the sensation of hearing. The wave we have already discussed. Now make sure clear yourself that the sound waves are longitudinal waves which always travel parallel to the medium. There are the two types of sound. First is called noise, second is a musical sound. What is musical sound? The sound which produce pleasant effect in our human ears is known as a musical sound. कि वो आवाज जो हमारे कानों के अंदर एक पुरकशिश दिल एक वो आवाज जो हमारे कानों के अंदर एक प्लेजेंट इफेक्ट से मुराद है कि वो जो हम जिसको पसंद करना या जिसको हम सुनना पसंद करें, ऐसे साउंड को हम नाम क्या देंगे? म्यूजिकल साउंड कहेंगे. फॉर एग्जांपल, sound of violet, lyre produced by a violin. Now these sound will create a pleasant effect in our human ear. Therefore, they are called as a musical sound. In musical sound, the wave pattern or wave form which is formed, they will be in symmetric, regular, and in ascending order. Therefore, they will affect a pleasant in a human ear. After that, we have a noise. Sound which produce unpleasant effect in human ear is known as a noise. कि वो आवाज जो हमारे कानों के अंदर चिड़चिड़ापन जिसको हम हमें नापसंदीदा हो, ऐसी आवाज को हम नाम क्या देंगे? नॉइस कहेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल द इरेगुलर साउंड ऑफ ट्रैफिक, कि जब भी ट्रैफिक के अंदर कोई भी आवाज प्रोड्यूस हो, वो ट्रैफिक वाला आवाज हमें पसंद नहीं आता, इसलिए उस साउंड को हम कहेंगे नॉइस. उसके अलावा साउंड फ्रॉम मशीन्स और फैक्ट्रीज, they will also irritate us or also create an irritation in our human ear. Therefore, they will be called as a noise. Now, the waveform for the noise is non-symmetric, descending order, and have lot of fluctuations. कि इसके वेवफॉर्म के अंदर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर है, कोई भी सिमेट्रिक नहीं होता, नॉन सिमेट्रिक है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसीज कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अप, कभी डाउन, नॉन सिमेट्रिक वे के अंदर ही ट्रेवल करती हैं. इसकी वजह से वो हमारे कानों के अंदर अनप्लेजेंट इफेक्ट दे देती हैं. नाउ देयर आर द फ्यू फ्रीक्वेंसी रेंजेस रिगार्डिंग द साउंड. फर्स्ट वन इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज.
A normal human ear can hear the sound with frequency from 20 hertz to 20,000 hertz. Such frequency range is called as a audible frequency range. अभी इंसान का जो कान है उसका कुछ लिमिटेशंस हैं जिस तक वो आवाज को सुन सकेगा. तो फ्रीक्वेंसीज हमने पहले भी डिस्कस की हैं. फ्रीक्वेंसीज हैं क्या कि जब भी वाइब्रेशंस एक सेकंड के अंदर मुकम्मल हों, जितने भी वाइब्रेशंस मुकम्मल हों उनको हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसीज. अभी अगर किसी भी साउंड के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के दरमियान हो, उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होगा उस साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहेंगे. और इन ऑडिबल साउंड को हम आसानी से सुन सकते हैं. मींस के ह्यूमन एयर, अ नॉर्मल एयर कैन हियर दीज साउंड्स. सेकंड है हमारे पास इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स. Sound waves having frequency less than 20 hertz is called as a infrasonic sound waves. कि वो sound waves frequency है वो 20 hertz से कम हो, such sound will be called as a infrasonic. For example, the vibration of simple pendulum. कि जब भी सिंपल पेंडुलम का मिसाल लें और उसको मूव करवाएं तो उसकी मूवमेंट के टाइम भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और वाइब्रेशन हमेशा साउंड वेव्स क्रिएट कराती है और जब भी ट्रेवल करेंगी दे विल गिव द सेंसेशन ऑफ हियरिंग. तो अभी इंफ्रासोनिक के अंदर जो वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है उसकी वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है दीज आर लेस देन 20 हर्ट्ज. तो 20 हर्ट्ज से कम होने की होते हैं जिसकी वजह से हम उन साउंड को आसानी से सुन नहीं पाते. It means कि we cannot hear the infrasonic sound because the frequency is less than 20 hertz. इंसान के कान की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है that is from 20 to 20,000 hertz. उससे 20 hertz से कम भी हम नहीं सुन सके. We have ultrasonic sound wave. Sound wave having frequency above 20,000 hertz are called as a ultrasonic sound wave. वो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा हो, ऐसे साउंड वेव को हम नाम क्या देंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहेंगे. और इन साउंड्स को भी हम आसानी से सुन नहीं पाएंगे बिकॉज हमारे कान की जो रेंज है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, ना 20 से कम ना 20,000 से ज्यादा. It cannot be heard by human ear because eardrums cannot vibrate with such frequency. कि हमारे कान के अंदर एयर ड्रम्स हैं जो एयर ड्रम्स इन फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट नहीं होती जिनकी वजह से हम साउंड नहीं सुन पाएंगे. Then we have a velocity of sound. The velocity we have already discussed. Velocity is defined as distance covered per unit time. Now velocity of sound. For understanding this, we have a simple experiment. We first go through it. Then we will make ourselves understand how the velocity of sound can be produced or with what speed or with what velocity a sound can travel. It is a common experience that flashing of light is seen earlier than thunder cloud. कि whenever there is a rainy season, before the rain falls, there is a flashing light and thunders in a cloud. It's a very common experience that lighting flash is seen earlier and the sound of that thunder will hear later. यही अमूमन हम एक और मिसाल से भी समझ सकते हैं कि अगर आसमान में हमारे ऊपर से कोई भी एरोप्लेन गुजर जाए तो उसका गुजर जाना पहले होता है और उसका जो आवाज है वो हमें बाद में सुनाई दे देता है. व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज दैट लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड. कि लाइट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है जिसकी वजह से आसमान के अंदर ये जो बिजली का चमकना है वो पहले नजर आ जाता है और जो बादलों का गरजना है वो हम बाद में सुनते हैं. क्यों? क्योंकि लाइट ज्यादा ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू साउंड. नाउ टू रिक्वायर द एक्सपेरिमेंट, द रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट इज सेट वेल एज शोन इन द पिक्चर व्हिच वी विल सी लेटर. कि व्हेन अ गन इज फायर्ड फ्रॉम वन पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, इन रिजल्ट फ्रॉम इट्स बैरल टू थिंग्स लीव द गन. वन इज फ्लैश ऑफ लाइट एंड अदर इज थंडर ऑफ साउंड. कि जब भी हम बुलेट फायर करते हैं किसी भी गन से तो हमें दो तरह की चीजें देखने में आती हैं. एक हमारे पास होता है उस बुलेट उस गन में से फ्लैश का निकलना, दूसरा द साउंड जो आवाज है.
On second point, on viewing the flash of light, the observer stop watching, but on hearing the thunder of sound, stops watching quickly. In this way, the time taken by sound between 2 points is noted. Now, in same way, the time is noted on the first point, then marked distance s between 2 points is divided by calculate mean time taken t to get the velocity. So the finally formula for the velocity of sound is simply the distance traveled by sound, how much the distance sound may travel, it will be divided by the mean time taken by that sound to reach or to cover that distance. कि जो भी मुफासला आवाज कवर कर ले और उस कवर शुदा मुफासले के अंदर जो भी एवरेज टाइम लगे उस टाइम को साथ उसको डिवाइड करेंगे, तुम्हारे पास क्या आएगा? वी गॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिसका मैथमेटिकली फार्मूला है v is equal to s upon t. Now these are common values, common speed of sound which experimentally calculated at the same temperature. कि velocity of sound on temperature that is 0 सेंटीग्रेड, अगर मीडियम डिफरेंस है हमारे पास तो 0 सेंटीग्रेड के अंदर जो एयर में साउंड की स्पीड होगी वो 330 मीटर पर सेकेंड, इन वाटर 1415 मीटर पर सेकेंड, in iron it will travel faster, that is 5130 मीटर पर सेकेंड. कि साउंड की जो ट्रैवलिंग होगी वो डिफरेंट मीडियम में, जैसे कि एयर, वाटर और आयरन. एयर को हम कहेंगे गैस, वाटर को लिक्विड और आयरन को सॉलिड. कि सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैवल फास्ट करती हैं और रीजन ये है कि उसके जो इंटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली क्लोज पैक्ड हैं, जिसकी वजह से जैसे ही एक बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वो वाइब्रेशंस क्विकली ट्रैवल करेंगी, क्विकली ट्रांसफर्स होंगी, जिसकी वजह से उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा पाई जाती है. This is all for today's lecture, and if you want to ask any question regarding today's topic, you may ask in comment section. Thank you very much.